वेलकम बैक टू माय शो कुकिंग विद देवाशीष। आप लोग सब अपने घर में चाउमीन जरूर बनाते हैं, बाहर भी खाते हैं, बट आज सिंपल चाउमीन आप लोग के लिए बनाएंगे जो आप घर में ट्राई कर सकते हैं। नॉन वेज चाउमीन, मिक्स चाउमीन। नूडल्स को हमने बॉईल कर लिया है, ऑयल अप्लाई करके ड्राई कर लिया है। ओवर बॉइल्ड नूडल्स में बढ़िया नहीं बनेगा, ये ड्राई होना चाहिए। ऑनियन को हमने स्क्वायर काट लिया है। अपने पास है प्रॉन, चिकन, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली, शुगर, अजीनामोटो, आप इसको स्किप कर सकते हैं, चिली सॉस, सॉल्ट, पेपर, विनीगर, एग, कैबेज, बेल पेपर्स, कैरेट्स एंड बीन्स को हमने काट लिया है। अब बाकी वेजिटेबल्स को हमें काटना है। 1, 2, 3, come on! वोक को गरम कर लिए हैं। अब इसमें सिसमी ऑयल डालेंगे, लॉट्स ऑफ सिसमी ऑयल। अब हम लोग चॉप जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली को इसमें डालेंगे। इसको हम लोग बढ़िया से फ्राई होने देंगे। बीन्स एंड कैरेट, ऑनियन, चिकन, little bit of sugar and pepper, salt and pepper, sorry। चिकन अपना सौते हो गया है। अब हम इसमें प्रॉन डालेंगे। लिटिल बिट ऑफ चिली सॉस, अजीनामोटो, जरा सा चीनी, a dash of
vinegar, अब हम इसमें अपना बॉइल्ड नूडल्स हमने कैबेज और कैप्सिकम को बाद में डालना है सो दैट क्रंचीनेस उसका रहे। एक को हमने फ्राई कर लिया है, कैप्सिकम कैबेज हमने डाल दिया है। एक को हमने फ्राई कर लिया था। अब इसमें चिकन है, प्रॉन है, बढ़िया से फ्राई करना है। ऑथेंटिक हक्का चाउमीन, lots of chicken and prawn. Please try in your home and let me comment. अगर पसंद आता है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग विद देवाशीष। थैंक यू वेरी मच।